Students, we will start the session by 11:05 sharply. Gauri ma'am, we can start the session. Yeah. So I just want to ask one thing. Are people allowed to unmute themselves and answer if I ask something? Yeah, they are allowed to do so. Okay. So So, good morning, everyone. okay. Can I give a brief introduction about you? Yeah, sure. Go ahead. Yeah. So, good morning, everyone. We extend a warm welcome to Miss Gourvi, ma'am, our distinguished guest speaker for today's session. As we gather here on this virtual platform, we are very privileged to have Miss Gourvi Kumari, who brings her a wealth of knowledge and experience in the field of market access management within the realm of life sciences and pharmacy. In her role as market access manager for institutional business, Ms. Gourvi Kumari has demonstrated exceptional skills in the navigating in the intriguing landscapes of pharmaceutical industry and markets, ensuring that the vital medications and healthcare solutions reach those in needs of efficiently and efficacy. So we eagerly anticipate Gauri ma'am's address. So let us prepare ourselves to glean insight for her vast experience. So ma'am, you can start please. Thank you so much, Shubham, for the introduction. For initials, I'll just briefly tell about myself as well. So basically, I am a pharmacy graduate, passed out in 2022, but then I switched immediately to project management. I got a good opportunity based out of Delhi. There, I was dealing with the entire marketing, digital marketing portfolio, and then I switched to pharmaceutical manufacturing industry, where currently I'm working as a market access manager. So, the point of this discussion, I think a few days ago, Shubham reached out to me, and more often than not, I get messages on my LinkedIn. So basically, I'm very active on LinkedIn. I get messages from all over India from students asking me, "Ma'am, what should we do? Like, we are graduates, but we do not understand the requirements of the industry. What are the skills that are required?" Just a second, I wanted to ask if we can go ahead in English, or should I use English and Hindi both? Shubham? Uh, ma'am, something specific that needs to be a bit interesting. You can go in Hindi as well. All right. Yeah. So yeah, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि लाइक मैम प्लीज़ टेल कि हम कैसे स्विच करें इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में समझ में नहीं आ रहा है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, आई कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स बट आई डू नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल. सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि देर इज़ नो स्पेसिफिक वो रेसिपी नहीं है कि स्पेसिफिकली आप इसको ऐसे 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 करेंगे तो हो जाएगा. The journey of graduation to employment is completely different for each individual, but yes, there are a few things that needs to be taken care of, which I have in my journey taken care of, and that has led me to this place. And I believe ये चीजें अगर आप सब फॉलो करेंगे तो आप लोगों को भी एक डायरेक्शन मिलेगा, वेयर टू मूव अहेड, वेयर टू गो, how to upskill yourself according to the requirements of the industry.
So this entire discussion will be based on that only. A lot of my findings that I have found along the way from my graduation to employment up till date. And if you'll have any questions by the end of this discussion, I'll be open to answering your questions as well. So let me just share my screen. So is it visible? Yeah, it's visible, ma'am. Okay, great. Uh, so here we are going to talk about what are the essential skills that are needed, to transition from graduation to employment. First things first, we need to understand कि लाइफ साइंसेज और फार्मा इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है. देर आर अ फ्यू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री एंड हर एक कॉम्पोनेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, या आप अपनी पर्सनालिटी को देख करके, अपने चॉइसेस, अपने स्किल्स को देख करके अपने आप को अलाइन कर सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं. So there are four major segments that I've figured out. सबसे पहला है R&D, second one is manufacturing, third is sales and marketing, and the fourth is supporting departments that support the entire R&D, manufacturing and sales and marketing, like finance, logistics, distribution and so on. So सबसे पहले तो हम R&D की बात करेंगे. R&D के लिए यू ऑल नो इट्स वेरी सिंपल. अगर आप अकेडमिया में हैं, इफ यू आर परस्यूइंग bachelor's then master's then PhD, if you are straightforward into academia you can easily transition into R&D. अगर आपका रिसर्च पोर्टफोलियो अच्छा है, if you really like researching on good molecules and things that are related to body and life sciences, so you can easily transition into R&D in an industry. It's not much of a big deal. The second thing is manufacturing. So basically this is specific to pharmaceuticals, but I'm pretty sure जो chemical sciences या फिर biological sciences के students हैं वो भी manufacturing में pivot कर सकते हैं. But you need to be very sure if you want to be there or not. अगर आप वहाँ start करेंगे तो वहाँ भी growth prospects होते हैं. You may start as a production officer or a production associate. There are vacancies in quality assurance, quality control in numerous organizations. So if you want to get into manufacturing, you can get into these particular job roles. Start preparing yourselves for those. Third one is sales and marketing. So basically मैं ये बताना चाहती हूँ, earlier me I myself as well used to think that sales is not as much of a respectable job, but that is entirely not the case. Now that I've started working in a team where sales and marketing, it works hand in hand. Even I go for field work for like 5 to 7 days a month. सो आई हैव रियलाइज दैट किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, बिकॉज दोज आर द पीपल हु गो ऑन फील्ड, हु मीट द कस्टमर्स, हु अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट्स एंड दे ब्रिंग बिजनेस टू द कंपनी. आपको लगता होगा कि सेल्स इज नॉट एज मच ऑफ अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, बट जब आप स्टार्ट करोगे एंड slowly you'll grow in that field, you will realize how much you are respected in a particular industry, since you are a salesperson or a sales manager. So that is one thing that I wanted to tell you all. Second is marketing. Yes, I do understand marketing के जो business acumen होता है वो acquire करने के लिए people ask you to switch to get an MBA degree or something, but it's not always the case. You can start wherever you are with whatever resources you have, whatever skills you have. अगर आपको पता है that you are very creative, that your communication skills are good, then you can apply for marketing executive positions, get some experience, then maybe look forward to getting an MBA later. Getting an MBA should not be the
the thing that holds you back from going into marketing. Okay, सो दैट इज वन थिंग. उसके अलावा जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, आई डू नॉट रियली थिंक कि अकाउंट्स एंड इन सब चीज़ों में लाइफ साइंसेज या फार्मा ग्रेजुएट्स का कोई मेजर रोल होता है. बट येस, यू कैन ऑलवेज स्विच. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देर इज दिस जॉब रोल कॉल एज द पेटेंट एजेंट, या फिर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं उसको, या फिर लाइफ साइंसेस का जो लॉ साइड होता है. सो आफ्टर गेटिंग अ लाइफ साइंसेस डिग्री यू कैन ऑल्सो गेट अ नॉर्मल LLB और गेट अ सर्टिफिकेशन एज अ पेटेंट एजेंट एंड go into law as well. There are always numerous options for you to explore. It's just that you should have an open mind to it, and learning agility बहुत ज़रूरी है. Let me move ahead. So, as I said, there is no exact perfect recipe, but I can tell you what has worked out for me. First things first, when I graduated, there were a lot of things that I did not know. मेरे पास hundreds of questions हुआ करते थे, but I did not know where to go and whom to ask those questions. So I took things in my own hands. I'm not ashamed of sharing the fact that, when I graduated, I uh, was pretty much jobless for about 2 months. ठीक है, I would not say exactly jobless because I was doing a lot of freelance and a lot of internships, but then still I did not have a full time job offer in my hand, which is very depressing for a lot of people. So that happened with me. But then I leveraged that time that I had, the time I invested in analyzing the entire industry, in analyzing various job roles, talking to my seniors, talking to my, the people whom I admired. I tried to connect with them, trying and understand what their job requirements are, what their job role is, if it aligns with what I can do or what I want to do. तो ये जो रिसर्च वाली चीज है ना, ये बहुत जरूरी है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल टेक इट सो लाइटली, एंड कई बार ऐसा होता है कि यू जस्ट hear someone preparing for something, or hear someone applying for a job, and you just go with the flow कि हाँ ये कर रहा है तो सही होगा, मैं भी कर देता हूँ या मैं भी कर देती हूँ. But that is not how it works. मतलब sooner or later you will find out that okay, this is not working out for you. या फिर वर्कआउट ही नहीं करेगा, या फिर आपको वैसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं. सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होना चाहिए दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेयर यू वांट टू वर्क, व्हाई यू वांट टू वर्क, व्हाट आर योर स्किल्स एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. Whenever you go to give an interview, even if it'll be called for an interview, it's a telephonic one, or a face to face one, the first thing that will be asked, or recruiters will want to know, is what you bring to the table. So unless you are clear in your head, clear in your mind what you want or what you are bringing to the table, you will not be able to crack that interview. And even आप crack it the interview तो second part हो गया. जो first part है, you will not be able to find relevant opportunities. अगर आपको ही नहीं पता होगा कि आप चाहते क्या हो, तो आप वो वैसे opportunities खोजने की कोशिश कैसे करोगे? समझ रहे हैं? So that is what I did in the initial few days after graduating. I explored everything. I used Google, I used, yeah, we have internet these days, right? So whatever information you want is readily available on the internet. There's LinkedIn, which is a professional platform. I cannot emphasize enough on the fact that how important it is for you to have a LinkedIn profile Yeah. these days. Being visible and being able to market yourself is also a very big thing. So you need to have a LinkedIn profile. Try and go through the profiles of people or jobs that you want to go for, and try and understand ki how they reached there. If possible, try networking with them, try sending cold emails or cold messages. That in itself is a very big topic to discuss. How to approach someone and how to talk to someone. हमें ऐसा लगता है कि
हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हाउ टू टॉक, बट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड यू नो trying to connect with someone for the first time without being too pushy, that is also an art, and it is an art to master. तो उसके बारे में हम और बाद में जान सकते हैं, we can always learn more about it. I hope I'm clear with the thing that I wanted to say. Whatever you are doing currently, wherever you are trying to go, please research, use the tools that are available to you. There's a smartphone in your hand, there's internet in it. Leverage it to research about the job opportunities you're looking forward to, or the kind of role you want to be in. Okay. Hello. Yeah, ma'am, you are audible. Yeah, I hope things are going pretty well. Yeah, students, you can have a thumbs up if you're. Yeah, I Yeah. would really like. Okay, great. Okay, great. So I'll just move ahead. So for that perfect recipe that has worked well for me, there are a few ingredients. The Yesterday I think I was having a conversation with one of my friends. We came up with these, 5 major ingredients that are required to have that we require to transition into our dream job or the role that we are looking forward to. The first thing is definitely communication. Second thing is knowledge about what you want to do, knowledge about your subject, the place that you're coming from. And the third thing is skills that we'll elaborate in the next 2 3 slides. Fourth thing is attitude. So I do not know how many of you understand this, but having the right kind of attitude is so important. You don't have to be arrogant about knowing a lot of things. You don't have to be under confident about not knowing anything about the industry. एटीट्यूड होना ज़रूरी होता है आज के टाइम पे. अगर सामने वाला रिक्रूटर आपको देख रहा है दैट yes, this person has the right attitude to learn, the right mindset to learn, then they will give you a chance for sure. So and the fifth thing is confidence. Definitely, अगर आज के टाइम पे आप confident नहीं है, because you all know that the industry is cutthroat these days. uh, I actually went through a data. I just found out that every year approx 2 to 5 lakh students graduate with a bachelor's degree in life sciences as well as pharma club together. So you can understand, if 2 to 5 lakh students are graduating, we are pretty sure that there are not as much job opportunities out there. The competition is very harsh. So what you need to have is a lot of confidence in yourself, and confidence आएगा कैसे उसका मैंने बता दिया कि you need to research a lot about what you want to do and why you want to do. So these are the 5 things that we need to focus on to transition from our graduation wala matlab graduation and UG wala mindset to a employment wala mindset. Excuse me. Yeah. So now that we are talking about the skills that are required, सबसे पहले there are a few soft skills that you need to develop by all means. In the past 2 years of my corporate, being a part of this corporate world, I have realized that these things are so important. You cannot undervalue them. The first thing is effective communication. आप एक एग्जाम्पल देख लो, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको. अगर कोई रिक्रूटर आपको ज्वाइन करवा रहा है ऑफिस में अपने टीम में, एंड देन उनको ये आपको सिखाना पड़े कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, that will not give a good impression, and they will not be looking forward to it. So you need to understand how to talk in a professional tone, how to, what kind of words you should use, what kind of words you should avoid, what kind of attitude you should hold, right? So effective communication, both verbal
एज वेल एज रिटन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश आना मतलब बहुत क्रूशियल है, ये है. बट you also know, I also know that English is an international language these days, and you need to have good hold on it if you really want to excel in in an industry. Because matlab 90-95% of communication happens in English only. So that is one thing. Effective communication is very important. The second thing is teamwork. So what happens is, ऐसा हो सकता है कि आप अकेले कुछ चीज़ें बहुत अच्छा कर लेते हो, बट जब आपका टीम में कोई जॉब असाइन होता है तो आप कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, या फिर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हैं अगर कोई आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है. दैट शुड नॉट बी द केस. यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम. बिकॉज जब आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, देर इज ऑलवेज अ टीम दैट इज फंक्शनिंग. चाहे आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में हो या फिर एक क्लस्टर या फिर एक टीम में काम कर रहे हो, दिल ऑलवेज बी पीपल अराउंड यू, एंड यू शुड ऑलवेज लर्न how to behave with them, how to communicate with them, and how to get the exchange of thoughts. The third thing is adaptability. At this point of time, the entire industry is ever evolving. Means India में भी आप देख सकते हो, on our country level as well, everything is digitizing. Make in India आ रहा है, digital भारत आ रहा है, you know all these good big initiatives are being taken. सो सिमिलरली जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है. और अभी के टाइम में अगर कोई अडेप्टेबल नहीं है फ्रॉम with the transforming needs of the industry, they will not be able to survive. Uh, this is somewhat linked to being tech savvy as well, which we'll talk about. But yes, adaptable होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन strategies बदल रहे हैं, हर दिन इंडस्ट्री के गोल्स बदल रहे हैं, हर दिन कुछ नया आ रहा है. You need to be adaptable. The fourth thing is problem solving. अ, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जुगाड़ू इंसान. सो बेसिकली अगर आप में ये एक स्किल है कि आप कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर वेरी मच एम्प्लॉयबल. एंड अगर आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं with some projects that you've done, with some work or internships that you have done, you can explain it to the recruiter that yes, I am a problem solving person. If you hire me, I will be able to find solutions. Even if I don't know it at present, I will very diligently will be able to find solution to that problem, and that is a very big deal. The fifth thing is learning agility. As I said, this is almost related to adaptability. Learning agility ये है कि आप जैसे जैसे चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री को देख रहे हैं, आप अपने आप को वैसे ही अपस्किल करते जा रहे हैं. तो आपके अंदर लर्निंग एजिलिटी उस चीज़ के लिए होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, आई जस्ट वांट टू डू व्हाट आई एम डूइंग. That won't happen. That will take, honestly speaking, that will take you or take us nowhere, right? So learning agility बहुत ज़रूरी है, and keep updating yourself, keep reading good stuff. If not anything, you will have points to talk about with your recruiter, with your hiring manager. आप उनको बता सकते हो that you are up to date on the trends and things that are happening in your industry, in the place that you are trying to apply. So that needs to be there. The sixth thing is having a solution oriented mindset. Problem solving और solution oriented होना are somewhat similar. प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो चाहत है, आप वो करना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं. और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है कि आपका एक वे ऑफ थिंकिंग आप वैसा डेवलप कर रहे हो कि जिससे आप सॉल्यूशंस की तरफ काम करते हैं. बिकॉज लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट या सो लेट मी जस्ट टेल यू, सॉल्यूशंस पे आजकल बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं. इन एन इंडस्ट्री व्हेन देयर आर मल्टी फंक्शनल टीम्स,
people almost every day talk about problems, कोई solution की बात नहीं करता. So जो लोग actually solution की बात करते हैं ना, they become the leaders in that place. I think that is also a very big soft skill to have at this point. And apart from all these things, I would also like to mention one more thing. It's ownership. So taking the ownership of, getting something done is a very big deal these days. अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, then trust me, you will be able to find something. You will be able to find a perfect job for yourself. So try and inculcate these soft skills in yourself, and I'm pretty sure if you will go for any kind of interview or apply for any kind of job, you will be considered, definitely. I hope that it makes sense. I like a thumbs up from all of you. Great. So, moving ahead, Yeah, right. Salish, you can ask if you have any question. Yeah, please, if anyone has any question, please go ahead. Yeah, Deepak, you can move ahead. Hello, good morning, ma'am. Good morning, Deepak. How are you? Good, ma'am. Ma'am, I also connect with these 3 points after my sir, ma'am, also graduate from pharmacy in Hmm? 2023. After Okay. that, I apply for different positions like Hmm. R&D and marketing and one more. You also told that mm, quality assurance. Okay. So if I go there for an interview, the interview asks for an experience for freshers. Which position I apply for? So basically, that is why I emphasized on one thing, Deepak. You need to research where you want to go and what you want to do. If you are blindly applying to positions, even if they are asking for experienced candidates, it's not going to work. Because in an industry, एक experienced candidate का और एक fresher का profile अलग अलग बनता है. ठीक है. तो अगर आप ब्लाइंडली शूट कर रहे हैं अपना रेज्यूमे या सीवी, आप अप्लाई कर रहे हैं कि कहीं भी लग जाए, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. यू विल हैव टू रिसर्च कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेशर्स का पोजीशन एम्प्टी है कि नहीं, एंड देन यू हैव टू अप्लाई. ऑल्दो आई विल ऑल्सो ऐड वन थिंग. जब आप अप्लाई करते हो तो योर सीवी और रेज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. I cannot emphasize enough on the fact that you have to tailor your CV or resume according to the position you are applying to. अगर आप R&D के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने सीवी में मेंशन करेंगे और हाईलाइट करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया है, आपने अंडर ग्रेजुएट में क्या पढ़ाई की है, कुछ मेजर प्रोजेक्ट किया है, पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे. अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें डालेंगे कि हाँ, आप अपने किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम किया, आपने पोस्टर्स बनाए हैं, आपने लीफलेट्स बनाए हैं, आपने कंटेंट पे काम किया है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पहला चीज है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि फ्रेशर्स के लिए पोजीशन चाहे आप वहां अप्लाई करें. और दूसरा ये होगा कि आपको अपना सीवी उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. यू कैन नॉट गो फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीवी बना करके हर जगह शूट कर दिया. इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am, clear. But ma'am, also I research about all the positions. Then I also evaluate myself and make my CV. But mostly I want to go for quality assurance and analytics. So, but if I apply there, oh, always every company wants some experience. So how can I apply it there? सी देर आर अ लॉट ऑफ वेज दैट कैन बी डन, एंड आई बिलीव अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगी तो ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा. बट एक सोल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ. ट्राई एंड नेटवर्क विथ पीपल हु आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी. चाहे वो आपके कॉलेज के सीनियर हो कोई, या फिर आप रैंडमली भी किसी से अप्रोच करके पूछ सकते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन में कोई वैकेंसी है या नहीं. ठीक है. दिस इज वन सच सोल्यूशन विच इज फुल प्रूफ. आप
रेफरल के थ्रू जाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग. उसका भी तरीका है, दैट वी कैन टॉक अबाउट इन अनदर सेशन. Okay, thank you, ma'am. Sure, thank you. Okay, let me just move ahead and finish this, and then we'll take another question. Right. Sure, ma'am. So, now we know about the soft skills that are required in the industry. I'll also talk about some, technical knowledge or hard skills, as they say, that are required in the industry. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. What happened is, we were trying to find someone who is really good with data. you know उनको मतलब हमारे टीम में एक रिक्वायरमेंट थी कि वी हैड टू हायर अ पर्सन जिनको डेटा हैंडल करना था बहुत सारा. सो एंड ट्रस्ट मी, वी tried so much, but we could not find a good resource who knew how to handle that much of data, as well as being open to communication, having teamwork wali cheese. ऐसा कोई person, that particular position had to be filled 3 times. Someone came, someone left, someone came, someone we had to ask that no, this is not actually working, you will have to leave. ऐसा हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक डेटा एनालिसिस का स्किल है ना, इट्स सो मच इन डिमांड इन द इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री. एंड आई विल नॉट से कि यू नीड टू नो एडवांस of everything, but you need to know the basic of data analysis, as in आपको excel पे काम करना आना चाहिए. Even if you do not know advanced excel, just try and learn basic functions in excel, like VLOOKUP, HLOOKUP, pivot tables. You need to know how these things work, because it will help you not only today but tomorrow, in whichever position you will be, right? So that is the number one thing. Data analysis के लिए आपको Excel, या फिर I'll just say कि आपको entire Microsoft Office suite पे ही work करना आना चाहिए, because at this point of time every organization, big or small, uses Microsoft suite in its internal operations. So that is the number one thing that you should and have to learn. You cannot go to an industry and then be on a job role and then ask them कि ये एक्सेल में डेटा कैसे डालते हैं, ये कैसे करते हैं. People, ठीक है, some people may be willing to help you, but then it is not their duty to help you with those things. You need to learn those things, and trust me, if you do, you will be very much employable. The second thing is research skills. In any position, either it be marketing, R&D, तो आप समझ जाओ, R&D is completely research. बट आप मार्केटिंग में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप असिस्टिंग किसी डिवीजन में हो, कुछ चीज़ों का रिसर्च करना आपको हमेशा आना चाहिए. यू नीड टू लर्न हाउ टू गो थ्रू text, how to find meaningful results from the text that is available, how to find answers to a few questions related to your job. तो रिसर्च का स्किल भी एक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के टाइम पे. द थर्ड थिंग, नाउ ये बहुत सब्जेक्टिव बात है कि आप जिस भी फील्ड से पढ़ करके आए हो, इतना तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो पढ़ के आया हूँ उससे आप कुछ भी पूछ लो, मैं बता सकता हूँ. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट. इवन आई एम ऑल्सो फार्मेसी ग्रेजुएट. अभी अगर कोई मुझसे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पूछेगा किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का, मैं नहीं बता पाऊंगी, दैट्स अ फैक्ट. बट एटलीस्ट आई विल नो कि वो मॉलिक्यूल जिसका नाम ले रहा है वो किस थेरेपी में यूज होता है. बेसिक नॉलेज. आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि आप जहां से भी जो भी पढ़ के आ रहे हैं उसका सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास है. फोर्थ थिंग इज बीइंग टेक savvy. टेक savvy होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप खुद को एनालाइज बेटर कर सकते हैं. आप लोग देखिए, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इंटरनेट, हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, छोटे छोटे फंक्शंस करने के लिए, ईमेल्स वगैरह, अगर आप ये चीज़ यूज़ करना नहीं जानते, nobody can help you in that.
initially you will have to help yourself, you will have to get accustomed to these platforms, to these tools, because in the industry आपको कोई भी बैठा करके स्पून फीड नहीं करेगा ये चीजें. आपको पता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आई ऑफन हैव दिस डिस्कशन. you do understand why the IT people और the BTech वाले जो graduates होते हैं उनको इतना easily opportunities क्यों मिल जाता है industries में. It's because they start preparing about these technical skills very early in their graduation. ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. जो टेक्सचुअल नॉलेज है वो तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड होगा वो करना स्टार्ट कर देते हैं. उन चीज़ों को लर्न करते हैं, उन चीज़ों का प्रोजेक्ट करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, सो दैट जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ दे नो दैट दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड आई नो दीज थिंग्स. और इसीलिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्विकली मिलती है. बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना फार्मा और लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट्स को यही होती है. हमें सिंस हमें अकेडमिया वाले माइंडसेट के साथ बड़ा किया जाता है, हम जब ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें अकेडमिया का ही सिर्फ लुक और आउटलुक पता होता है. हमें पता नहीं होता कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड होता है. And that is why I am here. I actually wanted myself to share these things with as many people as I can कि इंडस्ट्री फार्मा और लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. तो अगर आपने इनिशियल 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन और 4 years ऑफ योर ग्रेजुएशन में आपने नहीं किया ये चीज़, तो इमीडिएटली कीजिए. डेटा एनालिसिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, रिसर्च करने का तरीका, पढ़ना, साइंटिफिक आर्टिकल्स में से मीनिंगफुल चीज़ें निकालना, या फिर अपना सब्जेक्ट नॉलेज होना और टेक savvy होना, मतलब आपको यूज़ करना आना चाहिए टूल्स एंड सच टूल्स. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई एम mentioning it here. I hope this makes sense to all of you. Right. Can I get thumbs up from all of you if it actually makes sense? Right. So you can understand, basically it took me quite some time to realize that these things nobody tells you. At least for the pharma and life sciences people, हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता है in our graduation time that okay, आपको ये भी सीखना चाहिए, आपको इस चीज़ का सर्टिफिकेशन ले लेना चाहिए. आप ठीक है, आप गूगल का गूगल डॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड इन सब चीज़ों का एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीख कर उसका सर्टिफिकेशन ले लो, इट विल हेल्प यू. मे बी गूगल डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेशन ले लो, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब इन द क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग साइड. ठीक है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है हमें, हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो इसीलिए द फर्स्ट थिंग इज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको रिसर्च करना ज़रूरी है. आप किस जगह जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में. सॉफ्ट स्किल्स इनकलकेट करना ज़रूरी है, एंड देन ये टेक्निकल स्किल्स भी इनकलकेट करना ज़रूरी है. I'll just move ahead. Okay, I may take one question. So अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. Um, So I can see someone named Shailesh hand raised. yes, Alice, you can have your query cleared. No, sir. No questions? No, Anyone ma'am. else has any sort of question? You may ask. Ma'am, can I? हाँ जी, बोलो. Ma'am, like you have told about like some sort of soft skills. So, can you please emphasis on some exact tools, like from where we can get that resources, or any websites or Shubham, see, trust me, soft skills cannot be taught from books. That is why I am sharing it here. Yeah, technical skills, you can find plenty of stuff all over the internet. आप मतलब यूट्यूब पे सर्च करो, आप डालो, आपको सब कुछ मिल जाएगा about the technical skills. But the soft skills are something you need to be aware of. वो पर्सनल ग्रूमिंग आपको खुद से करनी पड़ती है.
when you talk to someone, you analyze that आपका जो talk था, did it make a good impact on the person in front of you? If it did, it's good. If it did not, what do you need to change? Because that is how I have learned it. इनिशियली हर किसी में ये चीज़ नहीं होता है, सभी को पता है, हम पैदा तो होते नहीं है सारे स्किल्स को लेकर के, राइट? तो मान लो मैंने एक कॉन्वर्सेशन की किसी सीनियर टॉप ब्यूरोक्रेट के साथ, एक कॉन्वर्सेशन हुई, हाय सर, हाउ आर यू, आई रियली एडमायर योर वर्क, सो आई वुड रियली लाइक टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, ऐसा करके मैंने कुछ कॉन्वर्सेशन किया. बट देन आई रियलाइज दैट ही डिड नॉट ओपन मच, ही जस्ट हाँ ये करके निकल गए. तो देन आई रियलाइज कि where did I go wrong, that I should avoid in the future to make much more meaningful connection and relationship. And it's a soft skill, you know, networking करना आना, अच्छे तरीके से बात करना आना with senior people is also a soft skill. तो वो चीज़ ना आपको खुद से ही सीखनी पड़ती है. आप खुद से एनालाइज करोगे अपने ही बिहेवियर को, अपने तौर तरीकों को, अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल को, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज व्हाट यू नीड टू फिक्स एंड व्हाट यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड. मेक सेंस, राइट? Yes, ma'am. Right. So I'll just move ahead. I think it's probably the last slide that I want to discuss. So right, देर आर अ फ्यू थिंग्स. अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि स्किल्स क्या क्या इम्पॉर्टेंट है या कैसे कैसे हम उसको अक्वायर कर सकते हैं, बट अब ये भी जानना ज़रूरी है कि हम मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू. दीज थिंग्स आर completely, you know, personal point of view that I have. You can always pivot and try something new. होता क्या है ना कि when we are during, you know, in undergraduation, we have mentors, we look up to our teachers and professors as mentors, right? But then they have been into academia since forever. With all due respect for all our seniors, all our professors, उनके बिना डेफिनेटली वी वुडंट बी हियर, राइट? बट देन उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो आपको गाइड करते हैं मोस्टली टूवर्ड्स academia. They, some of them may be able to tell you that there is a life outside of academia and an industry that you can focus on, but mostly सारे प्रोफेसर्स वो वैसा आपको आउटलुक नहीं दे पाते. तो इसीलिए आपको, दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए आपको अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत होती है. अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल बी फार्म, एम फार्म, पी एच डी, बी एस सी, एम एस सी, पी एच डी, अगर वो लीनियर पाथ को ब्रेक करके आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको मेंटर्स की ज़रूरत होती है. आपको बात करने की ज़रूरत होती है लोगों से कि हाउ वी कैन डू दैट, राइट? और बात करना इज सेकेंड. फर्स्ट थिंग इज हैविंग दैट थिंग इन योर ओन माइंड कि येस आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, एंड ऑलवेज हैव करेज टू डू दैट. ऐसा नहीं है कि लेट्स गो फॉर बी एस सी, एम एस सी, पी एच डी, वो ईजियर वे है, जबकि ईजी वो भी नहीं होता है. यू विल रियलाइज, अगर आप एक बार बी एस सी, एम एस सी, पी एच डी वाले रास्ते पे भी चलेंगे या फिर बी फार्म, एम फार्म, पी एच डी वाले रास्ते पे भी चलेंगे, यू विल रियलाइज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड ट्रस्ट मी, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो वो अकम्प्लिश करते हैं. लेकिन आपको ये चीज़ का भी करेज होना चाहिए कि वो लीनियर पाथ के अगेंस्ट जा करके आप कुछ नया एक्सप्लोर करें. ठीक है, यू ट्राई एंड यू फेल, इट्स फाइन, और यू ट्राई एंड यू फाइंड दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, इट्स फाइन. बट एटलीस्ट एक रिग्रेट नहीं रहेगा माइंड में कि हाँ मैंने कोशिश नहीं की कुछ नई चीज़ को ट्राई करने की या कोई नया स्किल अक्वायर करने की. ठीक है, first thing that has that we have discussed. Second thing is finding good mentors. अब इसका अपना तरीका है. As I've already mentioned, networking भी एक आर्ट होता है. आप लोगों से कैसे मिलते हो, आप उनको कैसा फील कराते हो अपने बारे में, आप कैसे गाइडेंस मांगते हो, उसके लिए भी मतलब वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है. पहले क्या होता था ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. व्हेन आई यूज टू बी इन माई ग्रेजुएशन, मैं अपने सीनियर्स को रीच आउट करती थी, तो कई बार ना वो नहीं रिप्लाई करते थे या फिर देख के छोड़ दिया या कुछ दिन बाद रिप्लाई किया. मुझे लगता था कि इतने भी क्या बिजी है, मतलब मैं सोचती थी ऐसा ऑब्वियसली कि इतने भी क्या बिजी है कि एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं. बट देन नाउ दैट आई एम इन दैट सीनियर वाला पोजिशन, आई रियलाइज कि एक्चुअली बिजी होते हैं.
मतलब आप नहीं समझ सकते, देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप सच में एक कोर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं. यू डू नॉट वर्क फॉर 9 to 5, यू वर्क फॉर 9 to 9. तो उसके उसमें से अगर कोई बंदा आपके लिए वक्त निकाल करके आपको कुछ गाइड कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है, देन इट्स अ बिग डील, इट्स एन एक्चुअल बिग डील. बट मुझे भी उस वक्त समझ में नहीं आता था ये, अब समझ में आता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. बी वेरी polite and be very concise and clear in your communication whenever you try and approach any senior or try to make someone your mentor. Ask short questions. उनको बोलो कि मैम सर whenever you get time, और दीदी और भैया whenever you get time, just try and answer me these things. I feel your suggestion would be valuable. Try and talk to them, try and understand their point of view, and definitely it will help. It helps always, has helped me, and trust me, it will help you all as well. The third thing and the last thing is set clear goals. अब इसमें दो चीज़ें हैं. आप अपने गोल्स को क्लियर रखो. आप रिसर्च करो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है. दूसरा चीज़ ये है कि पैसों के पीछे इनिशियली मत भागो, क्योंकि कई बार मैं ऐसा देखती हूँ, इवन आई हैव ट्राइड टू हेल्प पीपल गेट इनटू द इंडस्ट्री. इनिशियली क्या होता है कि लाइफ साइंसेज में जब तक आप अपनी स्किल्स को प्रूव नहीं कर देते और आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लेते, you get paid थोड़ा कम from the industry standards. Don't make it a prerequisite कि पैसे अगर नहीं अच्छे हैं तो मैं नहीं करूँगा. For the initial few months and year, please do not make it a prerequisite कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे एकदम से तो मैं नहीं करूँगा. You will have to enter the industry. You will have to prove that you are worthy of getting paid better. This is how things work. When I started working as an intern with the first organization. I used to get paid 6,000 rupees a month. ठीक है, the work was very less. I used to work for like 3-4 hours a day. But then I started somewhere, right? अगर मैं उस वक्त ये सोच के बैठी होती कि यार 6,000 नहीं, मैंने तो इतने पैसे दिए हैं मेरे ग्रेजुएशन में, इतने बड़े कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन करके आई हूँ, मुझे नहीं करना 6,000 की जॉब, तो फिर I would never have started. I would never have gotten the opportunity to become a project manager. You have to start somewhere, no matter how small it is. ये माइंडसेट मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप डेवलप करो कि अपॉर्चुनिटी अगर है, इवन इफ इट्स पेइंग लेस, स्टार्ट समवेयर, शो एंड प्रूव योरसेल्फ, gain the essential skills, and then ask for what you deserve. That is how things work. ठीक है? I'm done with the entire presentation. These are the things that I wanted to discuss. Now I'm open to questions for the next 10. Ma'am, Vasudev Patel has some question. What is the future of API in India? Can you brief that? API in India as in API manufacturing Yeah. organization. Hmm. I would really like the guy to, speak up. That would be better. I really like to have front end conversations. Vasudev? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vasudev. How are you? I am fine. Yeah, please tell me what exactly is your question? मैम मैं जनरली अभी एपीआई प्रोडक्शन में वर्क कर रहा हूँ सन फार्मा में. Okay. तो मैम मुझे एपीआई का जो फ्यूचर है बेसिकली Hmm. वो डिफाइन कीजिए आप, जो एपीआई का फ्यूचर इंडिया में है. See, Vasudev, I will not try and act like I know everything of the entire pharma industry. ठीक है? एपीआई आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वो एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि इंडिया में एपीआई का जो मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बट आई डोंट रियली थिंक दैट आई एम इन अ पोजिशन टू टेल यू कि वो फ्यूचर में कहाँ जाएगा या क्या करेगा. मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप ग्रोथ करेंगे. ठीक है? प्रोडक्शन में व्हाट इज योर एग्जैक्ट पोजीशन, इफ आई मे आस्क? एज अ केमिस्ट.
As a chemist. chemist. Okay, and can you explain your job responsibility just for me to understand better? मैम आई हैव जस्ट 1 month joining, तो सो मुझे अभी कुछ पता नहीं है फिलहाल. आई जस्ट कंप्लीट माई इंडक्शन एंड ट्रेनिंग एंड वर्क ऑन LMS एंड कंप्लीट माई SOPs. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऑल राइट. सो ठीक है, बेसिकली आई होप वासुदेव मैं आपको बता पा रही हूँ. आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू टेल यू कि इसका फ्यूचर कहाँ जाएगा, बट हाँ, मैं द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन से आपको ये बता सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है. इवन इफ यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू प्रोडक्शन, आप एक्सप्लोर करो, वहां पर अच्छे मेंटोर्स फाइंड करो अपने टीम में या फिर अपने सीनियर्स से. उनसे बात करो एंड देन दे विल बी एबल टू आंसर यू बेटर. ठीक है. यस मैम. हम्म. थैंक यू. और कोई? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Shailesh, you've raised your hand. Shailesh, please go ahead. You've raised your hand, I can see. I hope I'm audible. Yeah, Uh, yeah, I believe Shailesh has raised his hand, but he's not moving ahead with asking any question. uh, Then there's Shreya. yeah. Shreya, Didi, I am from VIT only. You know me. oh You're my hi Shreya, how are you were you? my singer. I am good, Didi. What about you? I'm also doing great. Please Um, ask away. that's nice. Didi, I just wanted to ask कि जैसे हम लोग के इमीडिएट सीनियर में ना अदिति सिंह दी है उनका लाइक प्लेसमेंट मुंबई में लगा मुंबई में हुआ था किसी जेल एजुकेशन नाम की कंपनी में Hmm. बट हर पैकेज वाज 6 lakhs. तो आई वाज थिंकिंग दैट मतलब ऐसे मुंबई जैसे जगह में रह के 6 लाख की नौकरी लेना लाइक वर्थ इट है. आई मीन अगर ऐसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रही है तो. See, let me tell you, the kind of cutthroat competition that is there for pharma and life sciences graduates, as I've already mentioned कि मतलब 4 से 5 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल. उस हिसाब से अगर आपको 6 लाख का पैकेज मिल रहा है इनिशियल्स में, इट्स वेरी गुड. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी गुड. देर आर ओके मेनी ओके. MBA ग्रेजुएट्स आउट देयर, क्योंकि MBA के भी 500,000 कॉलेजेस हैं. ठीक है. तो MBA ग्रेजुएट्स को भी 3-3.5 लाख का पैकेज मिलता है. दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, बट इट इज व्हाट इट इज. तो अगर आपको 6 लाख का मिल रहा है, इफ इट्स इनफ फॉर यू टू सर्वाइव फॉर इनिशियल 6 months, 1 year, and to gain some experience in a good industry, go for it. Just don't ओके even ओके think थैंक. twice. ओके थैंक यू दीदी. एंड दीदी अगर लाइक प्लेसमेंट जैसे मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट ठीक है तो अगर मेरा कैट नहीं निकलता है देन वेदर आई शुड गो फॉर प्लेसमेंट या फिर ऐसे ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना ज्यादा एडवाइसेबल है अकॉर्डिंग टू यू. See, I myself have not taken a drop, so definitely I am biased towards not taking a drop year. ड्रॉप ईयर से पता है क्या होता है? आप खुद में ही डिप्रेस्ड फील करने लगते हो. इफ यू आर रियली रियली हाँ. पैशनेट अबाउट गेटिंग एन MBA एंड गिविंग द कैट एग्जाम, नथिंग बेटर देन दैट. आप करो MBA, बहुत अच्छी चीज है. लेकिन डू नॉट just drop an entire year to do that. अगर शिद्दत से पढ़ाई की जाए तो 3 महीने बहुत होते हैं MBA क्रैक करने के लिए, कैट क्रैक करने के लिए, पता है. So what you can do is you can actually try and get your hands onto some internship, something that excites you, some work that excites you, and then parallelly you can prepare for an MBA. But trust me, this is a very individual discussion, and individual अपना एक हाँ. डिसीजन हाँ. आपको लेना पड़ेगा. या आई कैन नॉट बी द हाँ. पर्सन टू मेक अ जजमेंट फॉर यू, डिपेंडिंग ऑन the kind of situation you are in, or the kind of dreams you have.
I cannot be the one to make that decision for you, right? Mhm. बट फायदा दोनों Thank you में very है। much. अगर आप ड्रॉप लेके करते हो, अगर आपको लगता है कि ड्रॉप लेके करने से मेरा 100% हो जाएगा, देन गो हेड। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि नो, आई डोंट वांट टू रूइन एन एंटायर ईयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन एग्जाम, देन प्लीज कुछ ऐसा फाइंड कीजिए कि जहाँ आप वर्क भी कर पाए, कुछ एक्सपीरियंस भी गेन हो, एंड देन पैरेलली आप प्रिपरेशन भी कर सके। आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। Thank you, Didi. Uh, Deepak, you can go ahead. यस मैम, मैंने आपको मैम बताया था कि मैंने पहले प्रोडक्शन में अप्लाई किया था जॉब्स के लिए जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने मैम फार्मासिस्ट इंटर्न एक इंटर्न फार्मासिस्ट के जॉब के लिए फिर मैंने हॉस्पिटल में ट्राई किया था। तो मैं उसके साथ साथ एक कैट की प्रिपरेशन भी करता था। तो मेरा कैट भी क्लियर हुआ और मेरे मेरे को आईआईएम की तरफ से भी कॉल्स आए हैं, मैंने इंटरव्यू दिए हैं। अगर मेरा जनरल एमबीए में सिलेक्शन होता है या फिर एमबीए हेल्थ केयर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सिलेक्शन होता है तो मैं किसको प्रिफर करूंगा मेरी ग्रोथ के लिए? ओके, सो आपका जो बैचलर्स है वो किस सब्जेक्ट में है? मैम बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में ही है। सो देखिए, इफ यू रियली वांट टू कंटिन्यू एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट मेडिसिन और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हेल्थ केयर में, आई वुड सजेस्ट कि आप फार्मास्यूटिकल एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर आई डू नॉट नो, बट फार्मास्यूटिकल एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज इन इंडिया, एटलीस्ट नाइपर्स वगैरह जो है, या फिर देर इज दिस कॉलेज NMIMS है, माइका कॉलेज है, IIHMR का भी ठीक है। सो देर आर दीज फ्यू कॉलेजेस जिनका काफ़ी मैंने नाम सुना है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको काफ़ी अच्छे इनके एल्यूमनाइज भी मिल जाएंगे। अगर ऐसे कॉलेजेस में होता है देन यू कैन गो अहेड विथ इट, बट आई वुड नॉट रियली सजेस्ट यू टू गो अहेड विथ एनी Tier 2 Tier 3 छोटे मोटे MBA कॉलेजेस, कि जहाँ से you will not even know if you'll get a job placement support or not। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दीज MBA कॉलेजेस दे चार्ज हेफ्टी, दे चार्ज रियली हेफ्टी, बट देन दे विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर प्लेसमेंट्स। सो वो बहुत ही बैकफायर हो जाएगा फिर। ये मैम इससे जुड़ा हुआ एक ही क्वेश्चन है कि अगर कोई एक कैंडिडेट एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करके आता है और एक एमबीए जनरल करके आता है, तो आप इंडस्ट्री में हो तो आप अगर आप प्रेफरेंस वहां पे किसको दी जाती है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाले को या फिर एमबीए को, या दोनों कंसीडर इक्वली किया जाता है उसकी नॉलेज के बेस पे? MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड नॉर्मल MBA की बात कर रहे हैं आप? यस मैम। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर बंदे का केस 1 बैचलर्स फार्मा में है और जनरल MBA है, एंड केस 2 बैचलर्स फार्मा में है प्लस फार्मा MBA है, बोथ आर इक्वली ओके, क्योंकि फार्मा का नॉलेज तो दैट पर्सन हैज एनीवेज। ओके मैम। ठीक है, तो अगर आप देख लो, अगर आपको MBA में जनरल मैनेजमेंट का या जनरल मार्केटिंग का भी कुछ मिलता है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको फार्मास्यूटिकल MBA में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी ले सकते हो। बट हाँ, मैं एक चीज़ बताऊंगी, ये कई बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं ना, वो डिपेंड करता है ऑन द वेकेंसी, ऑन द काइंड ऑफ पोजीशन दैट वी आर लुकिंग टू। आप मैनेजमेंट क्योंकि बहुत बड़ा है, आप मैनेजर किसी भी डेजिग्नेशन पे हो सकते हो। आप लॉजिस्टिक्स के, सप्लाई चेन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, मार्केटिंग के, सेल्स के मैनेजर आप कहीं भी हो सकते हो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट देख रहे हो, तो आपको अगर नॉलेज उस चीज का चाहिए, आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट करो। लेकिन अगर आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं कि नहीं, आई वांट टू हैव ऑल माय ऑप्शंस ओपन, तो आई विल गो फॉर नॉर्मल जनरल मार्केटिंग MBA या फिर नॉर्मल MBA। या मैम, थैंक यू मैम। या okay, thank you so much. I hope I was able to add some value to some of your lives, give some insights into the industry and what are they looking forward to. Thank you so much for inviting me here, Shubham, and we'll be looking forward to Um, stay connected. yeah, ma'am, Yeah. just a last question from, I guess, Anshika.
Like Please. Anshika, you can go ahead with your question. Yes, Good, Anshika, I would really like to talk to you. Yes, go good ahead. afternoon मैम लाइक Good आई afternoon. वांट कि लाइफ साइंस की इंडस्ट्री में हम कैसे एंटर कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ एंड मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर करूँ या क्या लाइक कैसे अप्लाई करूँ. See, Anshika, I do not know if you were here. I have been talking about the entire thing for the past 1 hour कि आपको कहाँ start करना है, आपको कैसे अपने skills को leverage करना है. Shubham, will the recording be available? Will they Yeah, be मैम available? वो yeah. सब मैंने सुना वो सब मैं जानती हूँ बट हाँ हाँ. स्टिल लाइक आई डोंट हैव एनी आइडिया कि लाइक फर्स्ट स्टेप मैं कैसे लूँ या और कौन कौन सी See, इंडस्ट्री the है. first step that I believe is you need to identify your own skill set. You need to identify research and identify which job you want to go for. ठीक है, and then make a good resume. आई थिंक वो सबसे पहला स्टेप होता है. ठीक है, आप अपने स्किल्स को अपने इंटरेस्ट्स को अलाइन करो, आप अपने अचीवमेंट्स को अलाइन करो, आपके पास जो जो आप प्रोजेक्ट पे काम किया जो भी चीजें हैं, एक अच्छा सा सीवी बनाओ एंड देन स्टार्ट रिसर्चिंग फॉर द जॉब्स यू वांट टू गो फॉर एंड अप्लाई. ओके मैम. आई होप दैट हेल्प्स. Yes, ma'am. Thank you for this valuable sessions. I hope all will be benefited from that, and we will like to have some future webinars also, and like to discuss all the queries from. Yeah, so before I leave, I'll just suggest everyone, if you really want to, follow me or stay connected with me, you can get connected on LinkedIn. So my name is spelled as Gourvi Kumari. So you can just get connected with me on LinkedIn and ask away if there's anything that you would like me to help with. I'm very much open to answering everyone's questions. So मेरे साथ ऐसा होता है basically कि the kind of support that I never received or the kind of questions that were never answered for me, I try to answer it for people. Thank you so much. Thank you, everyone. Yeah. Thank Thank you, you. Shubham. Thank you, ma'am. And thanks a lot to EduFabrica for organizing this session. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks, everyone. Now you can leave the meeting. Great. Have a great day, everyone. Bye. Those who have not filled the form yet for certificates, they can fill.